Hello, everyone. How are you guys? Tell me. Hi, Jaireen. Hi, Shreya. Hello, Shishir. एंड एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। कल सीबीजेआर की तरफ से कोई यूट्यूब सेशन नहीं हो सका, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बट कोई बात नहीं। कभी और अभी और भी इवेंट्स आने वाले। सो टेल मी हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हैं सब और कैसा रहा सबका न्यू ईयर? सब मुझे बताएं प्लीज कमेंट सेक्शन में। हाय जिया, गुड इवनिंग। हाय अनन्या, हाय सना। आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या-क्या किया? ये बताएं मुझे। हेलो वंशिका, हाय कमलेश। ओह आरुष, आई एम सॉरी। ओके। सो आज काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं अभी। थोड़ा-सा वेट करते हैं, बाकी लोगों को आने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाय समीक्षा, आई एम गुड। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा मस्ती की, ओके। मेरा तो न्यू ईयर काफ़ी बोरिंग था। हमने तो सिर्फ़ घर पर टाइम पास किया, दैट्स इट, बिकॉज़ ऑफ कोविड एंड ऑल। हाय जिया, हैप्पी न्यू ईयर। केक कटिंग एंड पार्टी, ओके अनन्या। सो गाइस, आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स भेजे डिस्कॉर्ड पे और गूगल फॉर्म सबमिशंस पे, मुझे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने क्रिएटिव आइडियाज़ भी आ सकते हैं आप लोगों की तरफ से। सो वेल डन। बहुत आई वाज़ अमेज़्ड, आई वाज़ रियली अमेज़्ड आफ्टर वाचिंग ऑल योर सबमिशंस। और आप लोगों ने कितनी क्रिएटिविटी ऐड की है उसमें और बहुत सारे सबमिशंस आ रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस से तो बहुत ही ज़्यादा। Okay. Hi, Brutika. Hi, Shishir. Hi, Kanishk. Hi, Anand Prakash. Okay, Sana had some burger. Well and nice. तो आज के सेशन में क्या करने जा रहे हैं हम? आई विल शो यू गाइस। आज हम काफ़ी लोगों को डाउट्स आ रहे थे। आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट सेंड किए और आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम स्प्राइट्स कैसे ऐड करते हैं? हमें स्प्राइट्स ऐड करना नहीं आ रहा गेम लैब में। किसी को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी स्प्राइट नेमिंग में। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली स्प्राइट्स को कैसे यूज़ करना है, वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। So, pehle, let me just show you guys a little glimpse of our project. Okay, so I'm gonna switch to some other to the tab. Okay, so this is gonna be our project. Bhaag Alien Bhaag. This is a very interesting name, I know. So here we are gonna use sprites, we are gonna use score, और हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सीखने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा। आई प्रॉमिस यू गाइज़, बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट अस ओके। हाय, आई गेस काफ़ी लोग आ गए हैं तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ। दिस इज़ द स्प्राइट एंड दिस इज़ द गेम। ओके, let us move on to our today's session. So everybody go to code.org, sign in as you guys know, and then go to create and select game lab. लास्ट टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि कोड डॉट ऑर्ग इस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश की थी। ये कोड और ड्राइंग ब्लॉक्स पे हमने मेनली फोकस किया था, यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं। बट टुडे आज हम स्प्राइट्स पे फोकस करने वाले हैं। इस सेक्शन में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें से हम मैक्सिमम या एटलीस्ट 50% तो कवर कर ही लेंगे इस प्रोजेक्ट में। सो आई विल मूव ऑन टू ब्लॉक्स फर्स्ट. So, as I said in the last class, it's a very good practice to rename your project first. So I'm gonna rename my project और इसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? भाग मिल्खा भाग एलियन भाग, ओके? आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं इसे। इफ यू वांट टू गिव एलियन रन रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। सो गाइस, आर यू रेडी? आई एम
So, okay, those who know how to add Sprite, well and good. But I'm gonna tell you and show you how to add Sprite. So सबसे पहले let us have a look at our project. इसमें कौन कौन से sprites present हैं? सबसे पहले तो मुझे एक बैकग्राउंड नजर आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, ऐसा लग रहा है किसी और प्लैनेट, बिकॉज एलियंस इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में. तो हम बैकग्राउंड्स और स्प्राइट्स ऐसे यूज करेंगे जो थोड़ा अनयूजुअल से लगे, वियर्ड लगे, नॉट बिलोंगिंग टू आर डेली यूज टू लाइफ. मैंने जो बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज आ एलियन, एंड आई कैन सी वन माउंटेन, लावा और ऑब्स्टिकल, कुछ भी आप जो इसे कहें. So there are a few sprites that are involved. So सबसे पहले हम अपना background create करेंगे. So I'll go back to my project. I'll go to animations. Everybody, please carefully. पहले sprite lab में you have a block make new sprite. But यहाँ पर आपको एनिमेशन में जाकर सबसे पहले उस एनिमेशन को ऐड करना होता है अपने प्रोजेक्ट में, उसके बाद ही आप उसे यहाँ अपने वर्क स्पेस में ऐड कर सकते हैं. So I'll go to animations. I can see new animation. So we'll click on new animation and then we'll select a new one. Again, यहाँ पर draw करने के भी option है, upload करने का भी option है, and we have animation library too. So I'll select, क्योंकि हम background select करने जा रहे हैं, तो okay, let us see this one. This desert, see, we have a variety of options. अगेन, जैसे आपके स्कूल में या कॉलेजेस में, अभी तो आप सब स्कूल्स में हैं, तो लाइब्रेरी होती है, वहां पर आप जिस हर अलग अलग टॉपिक की बुक्स है. सिमिलरली दिस इज एनिमेशन लाइब्रेरी. यहाँ हर तरह के एनिमेशंस एंड यू विल गेट अ डिफरेंट, अ वेराइटी ऑफ स्प्राइट्स. ओके, सो आई विल सेलेक्ट दिस वन. ओके, जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, आई कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई स्क्रीन दिस दिस बैकग्राउंड. ओके, दिस स्प्राइट, ये भी एक स्प्राइट ही है, बट वी कॉल इट बैकग्राउंड. ओके, so wait, Adiraj is saying, wait ma'am, okay, we can draw in game lab. Yes, we can draw in game lab. Okay, so अब ये क्या है मैम? आई कैन सी four frames here. See, यहाँ पर लिखा है add new frame. What does that mean? See, frames, I'll explain you guys. Frames are secret to animations. Frames are secret to animations. जितने भी animations हैं विजुअली, जो animations लगते हैं आपको, वो सारे frames से बने होते हैं. Okay, for example, if एक visual effect आता है कि someone is dancing or some sprite is dancing. So see, this is one frame. An animation is composed of many frames. Okay, and this is another frame. And let us say this is another frame. Okay, so we have 3 frames. अगर इन 3 photos या इन 3 frames को हम बहुत ही जल्दी रन करें, तो it will look like an animation. See, what will be the resultant animation? It will look like dancing. It will look like it is dancing. Okay, इसका जो hand है, right hand, वो ऐसे ऐसे जा रहा है बिल्कुल. So these frames, क्योंकि गेम्स ही नहीं, हम यहाँ पर डिफरेंट न्यू चीजें भी सीखने आए. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेम्स आर सीक्रेट टू एनिमेशंस. इन फ्रेम्स को कंबाइन करके एनिमेशन बनता है. डिफरेंट अलग अलग फोटोज होती हैं, उन्हें एक स्पीड में, बहुत ही, आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत स्पीड में उन सारी फोटोज को हमने रन कर दिया, एंड दैट सीम्स लाइक एन एनिमेशन. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब बहुत हो गई एनिमेशन की बात. आई एम गोना डिलीट फर्स्ट 2 frames. Okay, you can keep them. See how to delete the frames. Just go, take your cursor to the frames. Please repeat how to make sprite. Okay, so go to, see, I was here at code. Go to animation. Above the play area you can find 2 buttons. 2 buttons मिलेंगे आपको, एक code और एक animation. So we'll go to animation, और एनिमेशन पे जाते ही आपको एक ये बटन मिलेगा न्यू एनिमेशन का. ओके, सो इस न्यू एनिमेशन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, दिस एनिमेशन लाइब्रेरी टेक्स्ट विंडो विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. गो टू द बैकग्राउंड्स. ओके, एंड सेलेक्ट दिस वन. आई हैव सेलेक्टेड दिस वन, डेजर्ट. ओके, सो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपके लेफ्ट साइड पे
ये स्प्राइट सेलेक्ट होकर आ जाएगा. ओके, सो आई एम डिलीटिंग द फर्स्ट टू फ्रेम्स. रिमेंबर गाइस, आई एम डिलीटिंग द फर्स्ट टू फ्रेम्स. यू कैन हैव द फर्स्ट टू फ्रेम्स. सो आई विल गो बैक टू कोड नाउ और हम देखेंगे कि अब इस स्प्राइट को अपने प्रोजेक्ट में कैसे लाना है. सो आई विल गो बैक टू कोड. ओके, सो स्प्राइट्स में टूल बॉक्स के वेट अ सेकेंड आर्यन. Okay, so toolbox के sprites में I can see the first block variable sprite is equal to create sprite. We are gonna use this block, okay? और हर sprite को हम यहाँ नाम देंगे, okay? So listen, wait a second. Here we'll name each and every sprite. जैसे हम सबका स्कूल में एक नाम होता है या यूनिक रोल नंबर होता है, वैसे ही हर एक स्प्राइट को हम एक यूनिक नाम देंगे. एक यूनिक नाम. We also call it variables. Okay, we'll use the concept of variables basically here to give name to each and every sprite. बट इसके कुछ रूल्स हैं. आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे सेंड किए थे जिसमें ये नहीं हो पा रहा था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ these three rules which you have to follow. इन तीन रूल्स को हमेशा याद रखना जब भी you are going to name a variable. Okay, फर्स्ट ये कि एक वेरिएबल के नाम में हमेशा लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, द कैरेक्टर अंडरस्कोर ही हो सकता है. ओके, फर्स्ट रूल इज लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर. एंड सेकेंड, वेरिएबल्स का नाम कभी भी कांट स्टार्ट विथ अ नंबर. ओके, कांट स्टार्ट विथ अ नंबर. कभी भी फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्प्राइट को 1 2 3 नाम नहीं दे सकते हैं. यू कैन गिव इट नेम स्प्राइट 1 2 3. ओके, सो वेरिएबल्स को और थर्ड रूल भी मैं आपको बताऊंगी, उसमें स्पेसेस नहीं आ सकते या इनके अलावा कोई और कैरेक्टर्स नहीं आ सकते हैं. ओके, स्पेस नहीं आ सकता. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम है ओरुसा फिरदौस. सो वो ओरुसा फिरदौस हम नेम नहीं कर सकते बिकॉज इसमें एक स्पेस आता है बीच में. सो तीन रूल्स बहुत ही इजी रूल्स हैं. एक लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर के अलावा आपके वेरिएबल में कोई नाम नहीं हो सकता. एंड अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर. ऑलवेज रिमेंबर. So now I'll give it wallpaper. Okay, क्योंकि हम wallpaper बना रहे, background बना रहे, as you guys can see here. So I'm gonna name it wallpaper. Create sprite 200, 200. Okay, now if I click run, I don't see anything. Why? Because मैंने अभी गेम लैब को इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं स्प्राइट बनाने के completely. Okay, so we are going to select the second block, that is sprite dot set animation. अब इसको भी मैं नेम करूंगी wallpaper dot set animation. ओके, सो पहले हमने स्प्राइट क्रिएट किया. ओके, और फिर उसका एनिमेशन सेट करना है. सो इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके you can find all your sprites which are there in the animations tab. Okay, so I'm gonna select desert one, and now again I'm gonna click run. Still nothing happens. Why? Because एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जो हमें इसमें इंक्लूड करना है. दैट इज वील गो टू वर्ल्ड एंड वील इंसर्ट योर ड्रॉ स्प्राइट्स. ओके, इन फंक्शन लूप. सी, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, आप में से कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन ड्रॉ क्या है. दिस इज एन इनफाइनाइट लूप. आप कुछ भी चाहते हैं, इसमें चेंजेस होते रहे, स्प्राइट्स बार बार क्रिएट होते रहे. जैसे लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट ऐड किया था एप्पल लोगो के लिए, जिसमें उसके कलर बार बार चेंज हो रहा था. तो इफ वी वांट सम चेंजेस टू हैपन कंटिन्यूअसली, वी पुट दोज ब्लॉक्स इनसाइड दिस फंक्शन ड्रॉ. ओके, सो फिलहाल वी हैव क्रिएटेड द wallpaper. Okay, so I'll click on run. As you guys can see, this looks so beautiful. ये option sprite lab में नहीं है. Here we can use animations as sprites. वहां हम sprites यूज करते थे, उनमें behavior attach करते थे, actions attach करते थे, but here we can have animations as sprites also. मैंने कुछ भी इसमें behavior या action attach नहीं किया है. This is all because of frames. Okay, all because of these two frames. ये दोनों frames जल्दी जल्दी execute हो रहे हैं और तभी ये animation जैसा effect आ रहा है. Okay, so game lab is way easy. It has too many options and we are gonna explore each and every option. Okay, so हमारा wallpaper तो create हो गया. अब
Let us see किस किस को डाउट आ रहा है. Okay, I'm doing the. Okay. Hi, Afia. Okay, so आप सब, are you guys okay? Have you guys added these sprite blocks? Okay, yes, ma'am, done. Hi, Inwali. WhatsApp group, you couldn't join Discord. See, you can use website, the Discord website also. It's not necessary कि आप app download करें. Website पे भी Discord available है और अपनी same email ID के साथ आप Discord join कर सकते हैं. WhatsApp group is not a good idea for us. Discord is very easy and it has too many features which support the doubt session, announcement sessions very flexibly. बहुत ही अच्छा होता है उसमें management doubts वगैरह का, इसीलिए we use Discord. Okay. So Samiksha, again, what function block does? This is kind of infinite loop. Okay. So ये बार बार चीजों को execute करता रहता है. Okay. So Kushagra, MIT App Inventor is better than App Lab. Okay. So I guess a lot of you have done. अब आगे बढ़ते हैं. Okay. So अब हम alien add करेंगे अपना. So this alien. Again, how to create sprites में जाएंगे. I'll get the block variable और अपने फर्स्ट एलियन को हम कुछ नाम देंगे. आप एलियन भी दे सकते हैं. ओके. आप प्लेयर भी दे सकते हैं. ओके. बट क्रिएट कहाँ पर करना है? सो एज पर माई स्क्रीन, एज आई कैन सी हियर, आई हैव क्रिएटेड द एलियन हियर. ओके. मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट. ओके. स्क्रीन पे. सो आई एम गोना यूज, लेट अस सी, I guess 100 and 300, around 100 and 300 is good. Okay. So I have created 100 and 310. Okay. So now again, see guys, everybody, it's very important to add draw sprites. How to change the size, ma'am? Okay. Frames are not changing. Wait a second. How come your frames are not changing? Because just because you haven't added draw sprites. एक तो प्लीज हैव, ओके, GCP7, आपके फ्रेम्स चेंज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपने ड्रॉ स्प्राइट्स को फंक्शन ड्रॉ लूप में, ओके, सो वी आर गोना कॉल इट ड्रॉ लूप. आपने ड्रॉ लूप में ड्रॉ स्प्राइट्स को एंटर नहीं किया है. और सना, वी कैन चेंज द साइज. डोंट वरी, आई एम गोना टेल यू. ओके. सो I'll wait. Sana, we can change the size. I guess this size is good. This size is automatically good that is available in game lab. Okay, so right now यहाँ पे क्योंकि मैंने alien का कोई animation set नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर we can see a square in the play area. So I'm gonna go to animations, new animation, and I'll add a new animation for alien. Okay, so देखते हैं कहाँ पर मिलेगा. I can see characters में we can search. Okay, so the alien that I have used is this one. Okay, alien green walk, or you can also type it here, alien green walk. जो भी results, wait a second, जो भी आपको search करना हो, alien and all, you can also search in the search tab. So I'm gonna select this one. Okay, so now we are gonna set animation for alien. Okay, so alien dot set animation, और इस ड्रॉप डाउन में हम select करेंगे alien green walk. Wait, Adiraj, your background is not coming. Why? See, because first select this block, this first block, variable wallpaper create sprite. Then the second one to set the animation, and then you have to add this draw sprites block from world. Everybody, I'm repeating this 10th time, I guess. You have to add draw sprites in the function draw or draw loop. Okay, so that your sprite appears on the screen. Okay. So I guess it must be clear. आप बिल्कुल code follow करते जाए जैसे जैसे मैं कह रही हूँ. Okay, so I'm gonna click on reset and run. As you guys can see, we have created our alien 2. Again, for you guys, मैं last time procedure repeat कर रही हूँ. Go to sprites, select the first block, drag it here. Okay, फिर उसमें अपने sprite को कोई नाम दीजिए. Okay, उसके बाद
Second block, sprite dot set animation selected and attach it here. और उसी को फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैकग्राउंड राइट, तो जिसको आपने नाम दिया है, जिस स्प्राइट को आपने नाम दिया है, उसी का एनिमेशन सेट करना है. सो गेट द सेकेंड ब्लॉक, गिव द नेम टू योर एनिमेशन एंड सेलेक्ट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन. यू हैव टू सेलेक्ट. आदिराज, मे बी आपने यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट नहीं किया होगा अपने स्प्राइट को, सो यू हैव टू सेलेक्ट हियर फ्रॉम दिस ऑप्शंस. And at last, very important, not last but not the least, this draw sprites. Where you will find draw sprites, go to world, the second block, draw sprites. This is very important, otherwise animations shown nahi honge. Okay, so the rules again, Rishika. See, okay. See, the rules are, in variable name, you can use only letters, numbers and underscore, and it cannot start with a number. और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एट द रेट, ये सारे हम यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स में. ओके, सो आई गेस दिस इज ओके. हमने अपने 2 स्प्राइट्स तो क्रिएट कर लिए हैं. अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट. ओके, सो आई कैन सी अ ब्लैक रेक्टेंगल हियर, बट I haven't used a rectangle. I have created a sprite for this. Okay, why? Because अगर हम drawing से rectangle select करेंगे ना, तो हम उसमें कोई property नहीं add कर सकते. That is why you can add it here, but I'll prefer you guys, क्योंकि ये sprites पे, this project is basically aimed at कि आप लोगों को sprite समझ आ जाए. इसीलिए we are gonna create a new sprite for that, for this black bottom. Okay, जहाँ पर score लिखा हुआ है. Okay, so I'll go to animations, new animations, and this time I'll draw my own. Okay, so अब मैंने rectangle select कर लिया. See guys, please have a look. यहाँ पर ये इतने सारे options है. This one, the rectangle tool, you have to use the rectangle tool and try create a rectangle. Okay, wait a second. Try creating a rectangle. I have created a black rectangle. इसे भी आप रीनेम कर सकते हैं. इसे आप बॉटम लिख सकते हैं, इसका नाम हम बॉटम दे सकते हैं. ओके, सो नाउ अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ. ऑलवेज क्रॉप योर स्प्राइट. द बटन दैट यू कैन सी ऑन द राइट ऑफ माई स्क्रीन, जिसपे अभी मेरा कर्सर है, ऑलवेज क्रॉप योर स्प्राइट. सी, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना यू नो इट्स यूजलेस टू हैव, वरना वो इतने सारे पिक्सेल्स ले लेगा. ये वसुंधरा मैम ने भी आपको बताया होगा, ये काफी सारे पिक्सेल्स ले लेगा एंड दिस विल क्रिएट ट्रबल. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रॉप स्प्राइट. वेयर इज क्रॉप स्प्राइट? एनिमेशन टैब में जब आप अपना स्प्राइट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो राइट साइड पे सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन. ओके, क्रॉप द स्प्राइट. You will take your cursor here, just click on crop your sprite, and now we are going to add this here. Okay, so अब इसका भी sprite add कर देते हैं. I'll call it bottom. Okay, so I'll call it bottom. So bottom को हम कहाँ पे create करें? I wanna create bottom here. See, अभी मैंने इसका कोई animation set नहीं किया है, तो by default ये एज एक स्क्वायर, मतलब एक सारे स्प्राइट्स, अगर आप इसका कोई एनिमेशन सेट ना करें तो ये ऐसे ही अपीयर होते हैं स्प्राइट लैब में. ओके, सो नाउ आई विल सेट इट्स एनिमेशन. फर्स्ट बॉटम डॉट सेट एनिमेशन एंड आई विल सेलेक्ट द एनिमेशन बॉटम. क्यों? बिकॉज हमारे इस एनिमेशन का नाम था बॉटम. सी गाइज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, यू विल गेट इट. ओके, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. यहाँ बस स्प्राइट्स को नेम करने होता है और उनका नेम बस याद करके सेट एनिमेशन क्रिएट. बस बहुत ही सिंपल है ये. करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये आपको आ जाएगा. ओके, सो नाउ आई हैव क्लिक्ड ऑन रन, बट हमें इसकी पोजिशन चेंज करनी है. ओके, सो whose alien is not moving? Okay, wait a second. See, अगर आपके आपका एलियन मूव नहीं कर रहा है, तो यू मस्ट नॉट हैव एडेड दिस ड्रॉ स्प्राइट्स इन दी ड्रॉ लूप. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस बॉटम को वी आर गोना चेंज इट्स पोजिशन और इसकी हाइट और विड्थ चेंज करेंगे. ओके, फॉर दोज हु आर आस्किंग कि स्प्राइट की साइज कैसे चेंज करते हैं.
सबसे पहले हमारे गेम में this is appearing in the bottom, so I'll just change its position. See, create sprite mein again this is the x coordinate where you want to create, like in the sprite lab, and this is the y coordinate. Okay, so for bottom I'm gonna select, see, around somewhere around here, 200 comma 380. Okay, 200 comma 380. एंड क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ ये पूरे प्ले एरिया को कवर कर ले, इसीलिए वी हैव अ वेरी कूल ब्लॉक sprite dot width for this. Okay, so this one, you guys see, scroll करेंगे dot x, velocity y, we'll see about these blocks, but यहाँ नीचे जाके we can find sprite dot width. Okay, so I'll select bottom dot width equals, क्योंकि हमारे प्ले एरिया का width 400 पिक्सल्स है, ये पूरा जो प्ले एरिया है हमारा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 400 पिक्सल्स का है. सो प्लीज गाइज हु आर स्पैमिंग, डोंट स्पैम. ओके, और जो भी डाउट्स होंगे we are gonna discuss them and sort them out on Discord. So अभी आप फॉलो करिए कि मैं कैसे इन चीजों को आपको क्लियर कर रही हूँ. ओके, so bottom dot width should be 400 pixels. Now I'll click on reset and run. Now you can see the width of the bottom has changed again. Now I'll select the height because in our project, हमारे project में इसकी height काफी ये काफी चौड़ा लग रहा है, काफी इसकी height, actually this is the height, इसकी height थोड़ी ज्यादा है, so we are gonna select its height to, let us say, 30 or 40 pixels. Okay, so I'll set its width to 50 pixels. Okay, reset and run. Yeah, now it looks good to me. So tell me guys in the comment section, क्या यहाँ तक चीजें कवर हो रही हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं, या जो issues आ रहे हैं please discuss it. Okay, where is width? See, go to sprites. See, थोड़ा सा नीचे जाके you can find sprite dot x, y, velocity y, scale, height and width. Okay, so here this is width. Okay, so very good, Suhani, done. Aryan, done. Okay, very nice. And who else is facing some issues? Okay, so no issues. Very nice. So let us move on. एक लास्ट स्प्राइट हमारा रह गया है इसमें, दिस माउंट ऑब्स्टिकल मीन्स कोई भी रुकावट. फॉर एग्जाम्पल हमारे रास्ते में कोई स्टोन आ जाता है या कोई ऐसी चीज जिससे रुकावट आया आगे बढ़ने में, दैट इज नोन एज ऑब्स्टिकल. ओके, सो हम ऑब्स्टिकल, या इसे, क्योंकि ये एलियन बेस्ड प्रोजेक्ट है, सो वी कैन कॉल इट माउंटेन बेस्ड, समथिंग लाइक दैट. ओके, so I'm gonna make one last sprite. This is gonna be the last sprite. Okay, so again we create another sprite for this. So I'm gonna name it obstacle, or you can name it hill, small hill. Okay, create sprite, and wait, we have to go to animations and add this. Okay, so I'll scroll down and then new animation. Okay, now इसमें एनिमेशन लाइब्रेरी में कहाँ जाए हम. Okay, so obstacles, as you can see there is a file or a folder named obstacles. इसमें से हम select कर सकते हैं वो. Okay, so I selected this one. As you can see, there are a lot of obstacles here. You can use cactus, you can use rock. Okay, so I used rock, and this one, rock grass. Okay, so I've used rock grass, and there are a variety of sprites. You can use any of them for obstacles. Okay, so इसमें, as you can see, I have added some creativity, that ये अपने आप में भी एक animation की तरह है, कभी white and कभी red. Okay, so how we are gonna do this? I'll copy this frame. In this tutorial, in this video, I'm also gonna tell you how to change a sprite or customize a sprite according to your own. So I'm gonna copy this,
सो कॉपी करने के लिए पहले वी आर गोना टेक आवर कर्सर ऑन द स्प्राइट, ओके। अब इसे हम डुप्लीकेट कर देंगे, एज आई कैन सी duplicate this frame, okay. This is optional, this is completely optional. If you want you can do, and if you don't you just skip it, skip this, but those who want to do unke liye bata rahi hu. Okay, so I created a second frame. So now I'm going to select a different color. I used red there, okay. So how you are going to pick a color? This first, paint bucket tool, उसके बाद color, okay. और color में हम pick करेंगे red color, okay. So I'm gonna pick red, fill red color here, 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 and here, okay. So my animation is ready for the hill or the obstacle, okay. So मैंने तो इसे hill नाम दे दिया, and now I'll set its animation. So hill dot set animation, hill dot set animation, and here we'll select our sprite, okay. So as I remember, this is rock grass, okay. So rock grass, now run, okay. But this looks too big, right? So हम इसकी पहले तो position change करेंगे और दूसरा इसकी height change करेंगे. We have to make it smaller according to our game. Okay. So इसकी position कैसे change करें? We are gonna create this. Okay. So I'm gonna create this at 400. I'm gonna show you the game first. See. ये हमारा जो ऑब्स्टिकल है ये हमेशा इस साइड से आता जा रहा है एंड दिस इज 400 पिक्सेल्स, ओके. सो आई एम गोना क्रिएट दिस at 400 320, okay. 400, and don't worry about this x coordinate and y coordinate, as I told in the previous class. ये थोड़ा सा टाइम लेने पे और प्रैक्टिस करने पे आप लोगों को समझ आ जाएगा, okay. See guys, don't fight in the comment section, okay. जिसे नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी, दिस वीडियो इज गोना बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड जस्ट फॉलो मी, ओके. फॉलो कैसे कैसे मैं कर रही हूँ, ओके. सो रीसेट एंड रन. एज आई कैन सी इट इज हियर, ओके. बट इसकी हाइट हमें कम करनी है. हाइट इसकी कैसे कम करेंगे? अगेन वी हैव अ ब्लॉक फॉर दिस, स्प्राइट डॉट हाइट, ओके. सो आई विल मेक इट्स हाइट हिल डॉट हाइट. एवरीबॉडी प्लीज रिमेंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्प्राइट्स की. ये सारे जो पिंक कलर्ड ब्लॉक्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं अपने स्प्राइट्स में, ओके. बट किस स्प्राइट में ऐड करना है, इसलिए आपको उस स्प्राइट का नाम भी यहाँ पर इन गेम लैब वी हैव टू गिव द नेम, ओके. सो इसकी हाइट आई गेस 100 इज इनफ. सो लेट अस टेस्ट. ओके, 100 looks good to me. Okay, nice. So अब I can see when I click on the press the up button, my alien is moving up. When I am pressing the down button, my alien is moving down. So अब हम movement add करेंगे अपने alien में. But before moving on to the movements, first tell me guys, किस किस को समझ आ रहा है, किन किन कौन सारे, मतलब no doubts. I just want to know. Yes, Suhani, there will be quizzes, definitely, but from the next week, क्योंकि अभी तो starting की classes है. Sorry. So everybody's, I just want your quick follow-up. Just tell me if you are done. Okay, no doubts. Okay. Okay. So we are going to move forward and we are going to add, but one thing I can see that in this project, ये black sprite जो है, that is appearing over the hill sprite, okay. But here that we have created, the hill sprite is appearing over. Hill sprite पहले आ रहा है and then the black sprite. Why? Because of sequencing. The blocks get executed in top to bottom manner. That is why, okay. So हम क्या करेंगे? Simply you can eliminate this also. Don't worry. We'll have a look at it in the end. Okay. So now regarding the movement, see when I'm clicking the up button,
my sprite is moving up, my alien is moving up, and when I'm moving it down, it's moving down. Okay, clicking on down button. Okay, so for this we go to control. Okay, everybody listen carefully. Toolbox में control पे जाएंगे, and we have very very interesting options for this. कीबोर्ड के buttons के लिए and mouse clicks के लिए भी बहुत सारे variety of options available हैं गेम लैब में. So I'm gonna select this if block, the third one. Okay, and इसे हम अपने draw loop में ले आएंगे if block. Okay, so everybody again in toolbox go to control और इसमें से if block ले आए यहाँ पर function draw loop में. Okay, so okay, now I'm going to world. So the पहला event हमें क्या add करना है, that when I click on see, पहले हम थोड़ा प्लान कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को. व्हेन अप बटन इज प्रेस्ड लाइक इन दी स्प्राइट लैब. ओके, सो माय एलियन moves up. Okay, so this is the one we have to do this. सो इसे करने के लिए सबसे पहले वर्ल्ड में ये बहुत सारे ऑप्शन है. एज यू कैन सी, ड्रॉ स्प्राइट्स, प्ले साउंड, स्टॉप साउंड, की डाउन, की वेंट डाउन. ओके, so this key down, the fourth option, see, first, second, third, fourth, fifth, sorry, the fifth option, this one, key down, we are going to select for that event when up pressed and when down pressed. जिन्होंने sprite lab किया होगा, हम तो वहां हम ये events add करते हैं when up pressed and when down pressed, but यहाँ हम if statements का add करेंगे in keys के लिए. Okay, so I'll attach this when key down. Okay, here inside the if block. Everybody please look at it carefully. If key down up, that means जब मैंने if up key को press किया हो, then I want my sprite कि वो थोड़ा सा ऊपर move कर जाए. Okay, so उसके लिए we have a very interesting block again. So I'll go to sprite lab. See, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा एलियन मूव कर रहा है. दैट मीन्स उसकी जो वाई पोजीशन है ना वो कम हो रही है. ओके, सो दिस मे बी क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर यू और ओवरवेलमिंग, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स एंड मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू गाइज. ठीक है, तो हमारा एलियन जो ऊपर मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि इसकी वाई पोजीशन कम हो रही है. ओके, so इसके लिए we have a very interesting block, the fourth one, sprite dot no, not random location button, Sana. We are gonna use this one, the fourth block, sprite dot y. Okay, so alien, because r हमारे alien का नाम alien है, so alien dot y, मैं चाहती हूँ ये 10 पिक्सल्स अप मूव कर जाए. फॉर एग्जाम्पल स्प्राइट लैब में हम वो ब्लॉक एक्शन ब्लॉक यूज करते हैं, मूव फॉरवर्ड बाय 10 पिक्सल्स, और स्प्राइट moves 10 पिक्सल्स नॉर्थ. सो हियर दिस इज द ब्लॉक फॉर स्प्राइट मूव्स. कैसे बैकएंड पे कैसे चीजें पीछे काम कर रही होती हैं, ये हमें गेम लैब में बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, तो आई वॉन्ट कि मेरा एलियन जब भी मैं अप बटन प्रेस करूं थोड़ा अप मूव करे 10 पिक्सल्स नॉर्थ डायरेक्शन में. सो व्हाट इज नॉर्थ हियर इन दिस केस इज, इट्स जस्ट दैट कि मेरे एलियन की वाई पोजीशन कम हो जाए. ओके, सो आई एम गोना गो टू मैथ्स, लुक केयरफुली एंड गेट द सेकेंड ब्लॉक. आई वॉन्ट कि मेरे एलियन की वाई पोजीशन कम हो जाए. ओके, सो आई एम गोना पिक दिस येलो ब्लॉक एंड अटैच इट हियर विद अ माइनस. ओके, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे एलियन की पोजीशन. आई एम गोना एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम सेइंग. ओके, दिस इज माय एलियन. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई प्रेस अप, आई वांट माय एलियन टू मूव हियर. ओके, बट स्प्राइट लैब में ये क्या होता है, जैसे जैसे हम अप मूव करते हैं हमारा जो है डिक्रीजेस. ओके, सो आई वांट कि माय स्प्राइट moves 10 pixels upwards. That means y में 10 pixels minus हो जाए. Okay, so how we are gonna attach this, I'm gonna tell you. Okay, so first I got if key up pressed. Okay, now alien dot y sprites में मिलेगा ये आपको alien dot y. I got this block and next I went to maths.
ओके, सो आई वांट कि मेरे एलियन का वाई पोजिशन 10 पिक्सल्स कम हो जाए. सो अभी मेरे एलियन का वाई पोजिशन क्या है? दिस इज अगेन एलियन डॉट वाई. सो आई एम गोना गेट दिस ब्लॉक alien dot y and attach it here and name it alien because how a game lab will know कि किसकी y position. इसीलिए आपको अपने alien का नाम बताना जरूरी होता है. Okay. Okay. So see, minus 10. Now I'm gonna see what happens. We are gonna see what happens. Okay. Now if I'm clicking on the up button, my alien is moving up. Okay, Adiraj. See, again go to animations, new animation, and select, okay, new animation and select this obstacles. Go to obstacles, and here you will find rock, okay, rock grass. Okay, so everybody up button. आपने सबने टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप सबने अप बटन के लिए ये इवेंट ऐड कर दिया है? इफ की डाउन अप. Okay. Game lab writing codes or using blogs. See, Jia, that depends completely on you. We are gonna move to the code also, पर अभी हम drag and drop programming ही use कर रहे हैं. Okay. So now हमारे alien की y position तो कम हो गई. But now I want कि when I press the down key, my alien moves down. Okay. So again, quickly we'll add another event for this. So if key down, this time the down key. Okay, so go to world. Again world में you can find, see, जितने भी mouse और keyboard से related blocks है ना, you are gonna find in world. और जितने भी sprites से related block है except for draw sprites, वो आपको sprites में मिलेंगे. This is very simple. धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा. Okay, so if key down, this time down key. Okay, सो सिमिलरली इस बार वी वांट कि हमारा एलियन नीचे मूव करे, यानी उसका वाई पोजीशन 10 पिक्सल्स बढ़ जाए. ओके, सो अगेन इसकी वाई पोजीशन हमें चेंज करनी है. सो एलियन डॉट वाई. सो हुज पोजीशन? एलियन. ऑलवेज रिमेंबर, नाम देना बहुत जरूरी है वरना एरर आएगा. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो टू मैथ्स एंड सेलेक्ट दिस +1 बिकॉज इस बार हम चाहते हैं हमारा स्प्राइट नीचे मूव करे, और गेम लैब में नीचे मूव करने का मतलब है वाई पोजीशन बढ़ना. सो इसीलिए हम प्लस वाला ब्लॉक यूज करेंगे. सो आई एम गोना गेट दिस प्लस ब्लॉक अगेन स्प्राइट्स, क्योंकि हमारी जो वाई पोजीशन है उसमें ऐड करने हैं हमें 10 पिक्सल्स. किसकी वाई पोजीशन? एलियन की. ओके, एंड देन अगेन 10. So now I'll test the buttons quickly. I'll click on run. Okay. Very good. अब हमारे alien में motion add हो गया है. It can move up and it can move down. अब according to our game, this obstacle is continuously moving. Okay. If अगर आप लोगों को याद हो जिन्होंने Sprite Lab का कोर्स कर रखा है, moving left and loop. Okay, you guys used to attach moving. Sorry, ma'am, done of okay, Shreya, very well done. So अगर आप लोगों को याद हो moving left and loop, that behavior जो हम create करते थे, so that it looks like this. Again moving left and right. Okay, so we'll attach the movement to the obstacle. So what we'll to this hill actually. Okay, so इसके लिए हमें क्या add करना होगा? इसके दो तरीके हैं, ठीक है? But I'm gonna use this velocity x block, okay, for obstacle or hill. Why? Because this velocity x, what this means, I'm gonna tell you. See, velocity means speed. Okay, velocity is just speed, but इसमें किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है that we can tell. पॉजिटिव मतलब सीधे डायरेक्शन में एंड नेगेटिव मतलब पीछे डायरेक्शन में. ओके, सो अगर वेलोसिटी x है दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली, एंड इफ वेलोसिटी y है दैट मीन्स वर्टिकली. सो हमारे यहाँ गेम में जो माउंटेन है ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, सो वी आर गोना अटैच वेलोसिटी x. लिसन गाइज अगेन, ठीक है, ये वाला ब्लॉक हिल डॉट वेलोसिटी x. Okay, hill dot velocity x equals -10.
अभी मैं जो बोल रही हूँ y -10 एंड ऑल, आपको काफी क्वेश्चंस, आपको काफी चीजें नहीं आ रही होगी कि मैम ने -10 क्यों लिया एंड ऑल. आई एम गोना टेल यू द रीजन. सी, नाउ आ हिल इज मूविंग, बट हमारा हिल एक बार गया तो इट डिडंट कम बैक. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ बट हमारे गेम में तो जब ये मूव कर रहा है तो ये वापस आ जा रहा है. तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अगेन वील गो टू इफ ब्लॉक. अगर हमारा, सी, हम पहले सोचते हैं ये कैसे काम कर रहा है. अगर हमारा हिल हमारे प्ले एरिया के बाहर चला गया, तब हमें अगेन हिल राइट साइड से फिर से आता हुआ दिखना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर तो हिल की, एज यू कैन सी, द एक्स इज 0. इसका मतलब अगर हिल का एक्स कोऑर्डिनेट मूव करते करते लेस देन 0 हो गया, तो उसका पोजीशन, उसका एक्स पोजीशन वापस से 400 हो जाना चाहिए. दिस ट्रिक वी यूज टू क्रिएट दिस विजुअल इफेक्ट कि इट इज मूविंग लेफ्ट एंड अगेन लूपिंग. ओके, सो आई एम गोना अगेन यूज दिस इफ ब्लॉक. ये इफ ब्लॉक बहुत ही काम की चीज है और ये हमेशा ही बहुत काम आने वाली है. सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस इफ एंड अटैच इट हियर. ओके, तो किसकी एक्स पोजीशन not working when I write? Okay. Okay, Mrigang, don't worry. We'll see. Don't worry. Just send the code to me on the Discord. Sorry. So okay, पहले हम conditions attach कर लेते हैं. If हिल का जो x है वो लेस देन 0 हो गया, तो हम हिल की एक्स पोजिशन को वापस से 400 कर देंगे ताकि वो विजुअल इफेक्ट आए. सो आई विल गो टू स्प्राइट्स. ओके, सो हिल डॉट एक्स. ओके, बट हिल डॉट एक्स की पोजिशन लेस. सी, हमें क्या करना है, इफ हिल डॉट एक्स इज लेस देन 0. ओके, सो इसके लिए वी हैव टू गेट अ लेस देन ब्लॉक. So I'm gonna get a less than block from maths. Okay, so I can see the less than block here. Everybody please, ye block, less than block or greater than block, they look very similar. So please do not worry. Is wale ko less than operator. Okay, if you scroll down you get plus, minus, multiplication, division, equal to, not equal to. See, this one is not equal to, greater than, equal to, and less than. So I'm gonna select less than. Okay, so hill ki exposition. So for hill ki exposition, we have a block here, hill dot x. Okay, hill dot x, okay, is less than 0. तब हमारी हिल की एक्सपोजिशन 400 हो जानी चाहिए. सो हिल डॉट एक्स शुड बी इक्वल टू 400. बट किसकी पोजिशन, हिल डॉट एक्स. ओके, so I'm gonna click on run. As you guys can see now, अब ये वो वाला इफेक्ट आ रहा है जिससे कि ये लगे माउंटेन और दिस हिल इज मूविंग लेफ्ट एंड देन राइट एंड कंटिन्यूइंग. ओके, एंड लूपिंग. सो टेल मी, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? प्लीज इन द कमेंट सेक्शन. Yes, Shreya, you can do -9 also. And for those who want me to zoom the Chrome, see, but this is of no use. आप screenshot ले लो. See, take a screenshot. Okay, so no doubt, no doubt. Okay, so I guess a lot of you see, जिन लोगों को भी थोड़े से भी issues आ रही है, don't worry. After the session is over, just watch it over again, and you will get each and everything, very easily. So अब हम इसमें conditions add करते हैं. ये as you can see, when the alien is touching the hill भी stop हो जा रहा है और alien भी stop हो जा रहा है. Okay, so हम इसकी condition add कर देते हैं quickly. Okay, so Samiksha is confused with greater than and smaller than sign. See, greater than and smaller than पे depend नहीं करता है. You can use मतलब अगर हम इस तरफ लगा दे, चीजों को उलट पुलट कर दे, तो meaning same भी हो सकता है. But see, this one operator, the block with this
with this. I have used this one. Okay, इसलिए don't worry. And Arna, okay, a lot of you are saying to zoom the Chrome. Okay, see, these are the conditions. Now, अब हम वो condition add करेंगे when my alien touches the hill, तो alien का भी motion, alien का भी animation रुक जाए और hill भी रुक जाए. Okay, so what we'll do, again we'll go to control and if block. This if block, I'm telling you, this is very important. ये बहुत ही important चीज है. Okay, so now जब alien is touching this, we have got a very interesting block for this. वहाँ sprite lab में तो we have an event for this, that when alien touches hill, उसके लिए यहाँ पर we have a block. If you'll scroll down, you'll find is touching. Okay, again, so I'll get this block here. When my alien is touching the hill, okay, when my alien is touching the hill, so I want कि मेरा alien का animation pause हो जाए और मेरा hill उसकी velocity zero हो जाए, मतलब उसकी speed zero हो जाए. Okay, so सबसे पहले alien के animation को रोकने के लिए हम कौन सा block use करें? So we have a very interesting block. Again, guys, those who missed, if alien dot is touching the hill, okay, if alien is touching the hill, where you'll find is touching, go to sprites, scroll down a bit, and this block, alien is touching hill. Okay, attach this block here, and then what do we want? Alien stop हो जाना चाहिए. See, as you can see, जैसे ही alien is touching the hill, alien stopped और इसकी भी velocity zero हो गई. So for that we have a very interesting block here. Alien dot pause. Okay, scroll down. See, अभी आप लोगों को ये सारे blocks थोड़े confusing लग रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा, but धीरे धीरे projects बनाते बनाते, use करते करते, you guys will get it. Okay, so sprite dot pause, that is alien dot pause. Okay, what this block will do, we'll test this. Okay, see, जैसे ही alien touched the hill, alien pause हो गया. Okay, and now for hill we are gonna attach alien. Hill की भी तो velocity zero करनी है. So for that, see, again we'll go to velocity x block, क्योंकि हमारा hill x direction में move कर रहा है. So hill dot velocity x equals 0. Okay, so reset and run. Again, see, now we have reached our target कि जब alien hill को touch कर रहा है, then alien की animation भी stop हो गई और हमारा hill जो है उसकी भी velocity zero हो गई. So tell me, किन किन लोगों को ये चीज समझ आ गई और किन मतलब who all are able to follow up, please acknowledge me in the comment section. Yes, we can destroy the sprites also. We have so many options. We have a lot of options. Okay. So, do you guys have doubts? Please tell me in the comment section. अभी तो we काफी ज़्यादा टाइम हो गया सेशन का and we haven't completed the game yet. So जो बाकी का गेम है we are gonna complete it in the next session. So अभी तक जो हमारे पास ये एक छोटी सी एनिमेशन ही बन गई है भाग एलियन भाग की. बेसिकली हमारा एलियन भाग तो रहा ही है एंड जैसे ही इट इज टचिंग द हिल, बट एक चीज हमने नोटिस की, जैसे ही इट टच्ड द हिल बट इसके बाद हमारी एनिमेशन चली नहीं रही. सो व्हाट वील डू, we'll attach in key down and key up both alien dot play, क्योंकि हमें सिर्फ alien के animation को तभी pause करना है when it is touching the hill. Okay, so scroll down and you will find another block sprite dot play and attach it in when key down up and key down down. Okay, so इन दोनों blocks को हम अटैच कर देंगे की डाउन अप में भी और की डाउन डाउन में भी. सी, एलियन एंड एलियन. ओके,
अगेन ये चीज़ काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़िंग लगी होगी। मैं तुरंत इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ, क्योंकि जैसे ही आई क्लिक्ड ऑन रन एंड और एक बार मेरा स्प्राइट यानी एलियन टच्ड द हिल, व्हाट हैपेंड वो पॉज़ तो हो गया, बट उसके बाद वो एनिमेशन शो ही नहीं कर रहा है। इसलिए क्योंकि हमने कंटिन्यूअसली उसे पॉज़ कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका एलियन जब टच नहीं कर रहा हिल को एंड अगेन यू वांट सम मोशन और एनिमेशन टू हैपन, उसके लिए आपको एलियन डॉट प्ले अटैच करना पड़ेगा दोनों इवेंट्स में, की डाउन एंड की अप में भी। नाउ आई टेस्ट इट। ओके, सो आई कैन सी, एक बार इसे टच करा देते हैं हिल से। ओके, नाउ इट इज नॉट मूविंग, बट एज सुन एज दे सेपरेटेड, नाउ अगेन एनिमेशन हैज स्टार्टेड प्लेइंग। ओके मैम, बैकग्राउंड भी स्टॉप हो गया। Okay. So tell me, guys, do you have any doubts? Why velocity blocks? So समीक्षा, velocity blocks सी, हमें इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका है जिससे कि हम इसकी स्पीड या इसे मूव करा सकते हैं, वो भी आई विल डिस्कस। और वेलोसिटी हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास दिस ब्लॉक प्रोवाइड्स अस वेरी गुड ऑप्शन टू सेट द स्पीड। ओके, अगर आपको इससे लेफ्ट मूव कराना है इस डायरेक्शन में तो आप एक नेगेटिव वैल्यू देंगे, जैसे हमने यहाँ -10 दिया है। अगर आपको राइट मूव कराना है तो हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ताकि इसका एक्स पोजिशन बढ़ता जाए। ओके, हाउ टू राइट अ कॉमेंट हियर? ओके, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल शो यू गाइज, डोंट वरी। Your hill is not moving, Ratna. Um, just see the code again. Okay, just see the code again. I'll minimize this. आज का सेशन यही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में we'll complete the rest of our project. सी, आप लोग इसे एक बार अच्छे से स्टडी करना। अगर जब एक बार स्टडी कर लोगे ना और ये वीडियो दोबारा रिवाइड करके देख लोगे थोड़ा सा बस, देन यू विल फील कि अरे ये क्या था, दिस इज सो इजी। ओके, सो कुछ चीजें रह गई हैं हमारे एनिमेशन में, जैसे स्कोर हो गया, और उसके बाद कैसे स्कोर बढ़ेगा हमारा, कैसे हम स्कोर को प्रिंट करेंगे, ये छोटी सी चीजें रह गई हैं। तो दीज थिंग्स वील सॉर्ट आउट इन दी नेक्स्ट सेशन। और फिलहाल दिस इज द कोड। ओके, और कमेंट्स वाली चीज, ओके, अगर आपने कह दिया है तो आई विल गो टू शो टेक्स्ट एंड शो यू हाउ टू राइट अ कमेंट। सी, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ये सारा कोड हम लोगों ने बनाया है मिलके। ओके, सो हाउ टू ऐड कमेंट्स, आई विल गो टू द लास्ट लाइन। ओके, और कमेंट ऐड करने का एक रूल होता है, तो 2 बार बैक स्लैश, ओके, एंड देन यू कैन राइट एनीथिंग। Orrusa, this is your comment. This is how you add comment in text. Okay, double backslash. I'll go to show blocks, और इसमें एक white color का block आ रहा होगा. If I scroll down, yes, gray color का block. Okay, so this is how we add comments. You can add comments. यहाँ भी available है world में. You can add comments here if you want to add. Orrusa, hello, anything. See, comments are nothing. They are just, reminders or short notes that you want to keep in your project. ओके, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं समझ आया डोंट वरी, जस्ट रिमाइंड करके देख लो एक बार आराम से, सब समझ आ जाएगा। और जो भी डाउट्स हैं, अगर जहाँ भी डाउट्स आ रहे, जस्ट आस्क मी और पिंग मी ऑन डिस्कॉर्ड। ओके, सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सो टेल मी, डिड you guys enjoy today's session? Okay. So I hope you guys enjoyed today's session. Till the next time we meet, इस एनिमेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करें. No homework for today. Okay, and till the next time we meet, goodbye. And hope आप लोगों को समझ में आया हो. Hope आप लोगों ने बहुत enjoy किया हो. Okay, so bye bye everyone.